should be noted, photographed as it is. photography करनी होगी, तभी जाके आप you can decide the range and extent of firing, angle of firing, and the wound ballistic wound pattern you can study it. You can avoid the self defense, foul play, self defense, benefit of doubt. जब तक फोटोग्राफी एग्जैक्ट नहीं होगी, नोटिंग एग्जैक्ट नहीं होगी, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, unless and until it will be completed, it will not work as expert witness in the court of law. Clear? Got it? Okay. Gunpowder deposits. A firearm victim's clothing must be preserved to prevent damage or disruption to the gunpowder residues deposited around the bullet hole. आप जनरली प्लास्टिक कवर का यूज करते हैं या टिश्यू पेपर का, उससे क्या होता है, एयर ड्राई, अगर ब्लड भी करते हैं तो एयर ड्राई करना बहुत जरूरी है, ताकि उसके कंटेंट्स जो है ना वो सनलाइट से इफेक्टेड ना हो, चाहे गन पाउडर के केस में या ब्लड के केस में या सीमेंट के केस में। किसी भी क्रूशियल केमिकल फिजिकल एविडेंसेज को, जो चांस प्रिंट के फिंगरप्रिंट भी हो चांस एविडेंस के रूप में मिलता है हमें, फॉरेंसिक एविडेंस के रूप में क्राइम सीन पे, तो दैट मस्ट बी प्रिजर्व इन प्रॉपर वे बिफोर सेंडिंग court for the permission and for the further examination to the forensic lab examination. Wet clothing should be air dried in an area out of direct sunlight, and then folded for protection, so that it cannot be disrupted, it cannot be mishandled. Okay, each item should be placed in a separate